गुड मॉर्निंग इंडिया। आज आम पढ़ा इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन, inclusion, what is the meaning of inclusion? Friends, inclusion simple refers to togetherness, combinedness। कहा कहा मध्य कंबाइन करवा आम, कहा कहा मध्य टुगेदर करवा, कहा कहा मध्य इनक्लूसिविटी रखा, स्पेशल चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड मध्य गोटे छात तले जितेबले गोटे स्पेशल नीड चाइल्ड एवं गोटे साधारण चाइल्ड मध्य कंबाइन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट आम क्रिएट करि परिबा। ताहि तो प्रैक्टिस विथ पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन with the environment of inclusivity called inclusive education। inclusivity कहा का मध्य स्पेशल चाइल्ड with नॉर्मल चाइल्ड मध्य। ओके, से यूनेस्को कहे एनी चाइल्ड may experience a special need during the course of educational year। जेतेबेले से पाठ पढ़ा को आरंभ करे तार बहुत सारा आवश्यकता मध्य रही थाए एवं नीड मध्य थाए। जो हम से नीड को देखिबा ताहा ना होची स्पेशल नीड। स्पेशल केयर हो, स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल क्वेरी हो, जानिबार इच्छा जदि तार स्पेशल थिबो ताको आमे कहि परिबा गोटे एजुकेशन वर्ष मध्य ता स्पेशल नीड। सम चिल्ड्रेन फील लेफ्ट आउट्स एंड नेभर एंटर स्कूल। किछि किछि पिलांगु मध्य सेतिकी सैटिस्फैक्शन न आसे, सैटिस्फैक्शन लागे नहीं, से माने स्कूल मध्य जाते नहीं और एंटर ओनली फॉर ए फ्यू इयर्स, आउ किछि किछि अल्प वर्ष रही जाती एंड आज रिपीटेशन बिकम ड्रॉप आउट्स, और धीरे धीरे यह ड्रॉप आउट रे परिणत हो जाए। यही समस्त समस्या को आखि आगे रखी गोटे बढ़िया सुंदर पदक्षेप नियाई ता ना होची एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल यह को कंपलसरी करिया पई भारतर संविधान 21A फंडामेंटल राइट को 21A फंडामेंटल राइट को जारी करिछि, जहाँ एजुकेशन फॉर ऑल रखिछि एवं प्राइमरी एजुकेशन को बाध्यतामूलक आज ए फंडामेंटल राइट 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांको तार संविधान अंतर्भुक्त करिछि। ठीक अछि। ए एजुकेशन फॉर ऑल should ensure the right of all children to a meaningful education based on individual need and abilities। इंडिविजुअल नीड ता आवश्यकता ता दक्षता को आख्या रखी एजुकेशन फॉर ऑल दिया जिवे कमे कोन कहबा इनक्लूसिव एजुकेशन। एबे हमें डिस्कस करबा दुईटी टर्म विषय रे। से दुईटी टर्म होची गोटे होची सेग्रीगेशन आ गोटे होची इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन अर्थ कौन? सेग्रीगेशन अर्थ होची टिके अलगा करे दबा। इंटीग्रेशन अर्थ कौन? इंटीग्रेशन अर्थ होची आमे संयोगित करिबा। ठीक अछि। सेग्रीगेशन अर्थ कौन? डिसेबल्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस और दोज लर्नर विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो माने डिसेबल्ड थिबे, जो माने स्पेशल नीड को आवश्यक करथिबे, being placed in any form of a segregation education setting, तांको अलगा करि दबा। गोटे एग्जांपल ना बुझ पारिया, यह गोटे इंस्टीट्यूशन। ए इंस्टीट्यूशन ले 100 जन छात्र पढुछंती। ए 100 जन छात्र मध्यरु 20 जन छात्र डिसेबल्ड अर्थात नॉट एबल टू लर्न एज ए नॉर्मल सेटिंग। ए मानंकु अलगा कर देबा 20 जन को भीतर 100 जन आ केतन रहले 80 जन। 80 जन नॉर्मल चाइल्ड नॉर्मल इंस्टीट्यूशन पढ़ले, ए 20 जन को अलगा कर देबा
आपको आम कौन कहबा सेग्रीगेशन। दिस ट्रेंड्स टू फोर्स डिजेबल्ड पीपुल टू लीड ए सेपरेट लाइफ। यह से इनक्लूसिविटी रहा ना, से इंटीग्रिटी रहा ना, से कन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मेंटेन कला ना। तेणु परवर्ती अवस्था आम कौन कले इंटीग्रेशन आनिले। प्रथम आसला सेपरेट एजुकेशन, तापर आसला इंटीग्रेशन एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तापर आसला इनक्लूसिव एजुकेशन। सेपरेट स्पेशल एजुकेशन आम कौन देखिले सेग्रीगेशन एजुकेशन। सेग्रीगेशन प्रोसेस रे स्पेशल एजुकेशन दिया होतला। इंटीग्रेशन कौन है गोटे इंस्टीट्यूशन मध्य 20 जन पिला रहिबे, इंस्टीट्यूशन बाहर ना, किंतु आज गोटे सेटिंग रे पढ़िबे। दिस इज इंटीग्रेशन। बट सेग्रीगेशन मीन्स आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टोटाली तांको इंस्टीट्यूशन संपूर्ण भाव में काढ़ी देवा को आम कौन कहबा सेग्रीगेशन। बट इंटीग्रेशन माने इंस्टीट्यूशन ले रहिबे किंतु आज ए सम डिफरेंट। ओके, इंटीग्रेशन माने कौन मीन्स डिजेबल्ड चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज अटेंडिंग मेनस्ट्रीम स्कूल। मेनस्ट्रीम रहिबे द चाइल्ड इज accepted into a ordinary school but is often taught in separate classroom। गोटे सेटिंग मदर सेपरेट क्लास रे पढ़ा जिवो आज वन सेटिंग बट सेपरेट क्लासरूम। The child has little or no connect with his and her non-disabled peers। Little connect, just the child has little or no connect। गोटे इंस्टीट्यूशन मध्य 80 जन पिला नॉर्मल चाइल्ड, 20 डिजेबल्ड चाइल्ड। यही पार्थक्य अच्छी गोटे कांथ मध्य। एठी टीचर पढ़ेले नॉर्मल जो मैंने ट्रेनिंग होती, एठी स्पेशल टीचर पढ़ेले 20 जन को। यांक मध्य कनेक्शन लिटिल रही पारे बा नो कनेक्शन मध्य रही पारे। दिस इज इंटीग्रेशन। सेपरेशन इज नो कनेक्शन बट इंटीग्रेशन हैव सम कनेक्शन बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड। ओके, प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम। से माने कौन कौन सब प्रॉब्लम फेस करते डिजेबल्ड चाइल्ड जदि से ऊपर आम आलोचना करबा तबे प्रथम देखिबा इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ignorance by others peers, inferiority, not sufficient facility available for them। This is inferiority complex or environment, lack of understanding his own problem, situation, condition, adjustment problem, not adjust perfectly but needs some special person to help them, isolated and segregated, some prejudicial concept of peers, prejudicial concept of teachers, prejudicial concept of dogma belief of administration, dogma belief of authority can help to isolated and segregated this child from the mainstream। Okay, lag behind means it is a very lag behind means पछ रखिदेवा टिके अलगा करदेवा जो कथा हम कहे लैग बिहाइंड पछ रखिदेवा से डिजेबल पछ रखिदे। दिस प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम एंड फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन। से तो डिजेबल्ड अच्छा आहरी लदी दिज्व एक्स्ट्रा बर्डन फिलिंग्स इनसिक्यूरिटी से फिल करते परफेक्टली से जापारती इनसिक्यूरिटी सिक्यूरिटी से सुरक्षित मन करती ना। लैक ऑफ एक्सप्रेशंस भीतर रहे। इंट्रोवर्ट नेचर कहीं मिसती ना। नेगेटिव अप्रोच सोसाइटी देखाए। ठीक अच्छे और हूँ साइनेस रही था। ठीक अच्छे, साइनेस कौन चुपचाप बसवा कहीं तो कथा नहीं मिसी पार नहीं। इंट्रोवर्ट साइनेस आज ए स्मॉल डिफरेंट। इंट्रोवर्ट मीन्स नॉट शेयर इमोशन, नॉट शेयर फीलिंग्स, नॉट एबल टू extrovert mind, but shyness is just simple normal not share with his emotion and feelings and others problems to her friends। shyness means चुपचाप बसवा साधारण बसवा चुपचाप क्लास करवा चुपचाप क्लास आसवा क्या तो मिसवा नहीं क्या तो कथा दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड shyness। सेमिति सहित
ହୋଇଥାଏ। What is the meaning of inclusion? Inclusion ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ disabled people of all age, those learners with special educational needs level being educated in mainstream education setting alongside their non-disabled peers. ଗୋଟେ non-disabled peers ଗୋଟେ ହେଉଛି special education needs peers, where there is a commitment to removing all barrier, ସମସ୍ତ barrier, no discrimination, to the fulfill participation of everyone as equal value and unique individual. ଇକ୍ୱାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ବୁଝିକି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇନକ୍ଲୁଜନ୍। କ'ଣ କହିବା? ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କହିବା। Real concept of education for all is called inclusion. But inclusive education କ'ଣ ଯଦି କହିବା? It is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that a normal ones with the same group. ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଡିଜାବଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ନଟ୍ ଡିଜାବଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳନ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ନର୍ମାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ହେଉଛି ଡିଜାବଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିବ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିବ with equity manner. This is called inclusive education. Most important is participation, practice of inclusive approach, participation of inclusive approach called inclusive education. Without practice, without participation, inclusive education approach is valueless. Finally देखिबा meaning of inclusive education. बहुत सारा जिन डिस्कस कले, बर्तमान आम फाइनाल पहुँचवा मीनिंग ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन? इनक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज ए लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual reference, learning style and language, without any discrimination, create a holistic, normal, suitable, accessibility, supportive learning environment for both them, called inclusive education, without any discrimination as a social, physical, economical, mental, nothing discrimination in this place. जदि आमे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को आख्याग नबा सेबे से इनक्लूसिव एजुकेशन को कौन डिफाइन करिछि आमे देखिबा। इनक्लूसिव एजुकेशन आज डिफाइंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कौन कहि इनक्लूसिव एजुकेशन विषय? फास्ट कहला डिसेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फास्ट डिसेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने डिसेबिलिटी होती सोसाइटी कर्तव्य से कौन कर इनक्लूसिविटी आण इनक्लूसिव सेटअप देकी सेमानंकर समस्त दायित्व को बहन कर। डिसेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फेल्योर ऑफ ए चाइल्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ द फेल्योर ऑफ स्कूल। जदि गोटे चाइल्ड फेल हो जो से अक्षम होउची तेबे तार भूल नुहे, यह स्कूल सिस्टम रो भूल अटे। एनसीएफ 2005 मत प्रदान करुछि। जदि आमे 3 नंबर पॉइंट को डिस्कस करिबा, नो सिलेक्शन प्रोसीजर टू बी adopted for
denying admission to learner with disability ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଡିନାଇଂ କରାଯିବନି, ଡିଲେ କରାଯିବନି, ସେମାନେ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ତ ସେମାନେ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଇଲେବୋରେଟ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ everyone has different from anyone अर्थात आम कह समस्ते समस्त भिन्न अटंती जो आम ट्विन्स को आख्या नवा दुईज ट्विन्स मध्य फिजिकाल मेंटाल इमोशनल जान आम जहाँ कहते से डिफरेन्स अच्छी आउ डाइवर्स देखा आमे कौन करवा ना सेमानंक भीतर डिफरेन्स को आसेप्ट करवा आ इलाबोरेट करवा डाइवर्सिटी को समस्त मध्य इंटरचेंज ऑफ डाइवर्सिटी को आमे करने को सक्षम करवा। तापर आमे यदि नेक्स्ट पॉइंट को आलोचना करवा इनक्लूसिव इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड इट आल्सो मीन्स नॉन एक्जिस्टेंस दिस मीन्स इनक्लूसिव इज नॉट कन्फाइंड टू बी डिसेबल्ड यह सेतिंग मध्य सीमित नुहे इट इज मीन्स नॉट एक्जिस्टेंस यह मध्य धीरे धीरे तांका पाखरु दूरी जाई परिबो आज ए सुइटेबल सेटिंग लर्न ह्यूमन राइट्स एंड कनकर ह्यूमन रॉन्ग आमे यदि कहबा आमे ह्यूमन राइट को सेतिक सचेतन होइकी पढ़िबा आ जो सब डॉगमा बिलीव अछि ताको आमे दूर करबा। हैंडिकैप इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टेड हैंडिकैप अर्थात आम कहीपर हैंडिकैप इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट अर्थात जो हैंडिकैप्ट ए सोसाइटी तैयारी करिछि आमे कौन करबा डिकन्स्ट्रक्ट हैंडिकैप्ट सेमानकर हैंडिकैप मनोभाव को आम दूर करबा समस्त उदाहरण दबा जिमिति भीम बही कथा कहबा से मध्य तांकर अंध दृष्टि हैंडिकैप हो पारती आम एम्पावरमेंट कर हैंडिकैप्ड जो क्षमता ताहा तांको पर कुछ प्रभाव पकई पारि नथिला से तांकर पेशा को लेकिन सारा विश्व आज परिचित तेणु सेमिति आम बहुत सारा महान व्यक्ति कथा को उदाहरण देकी तांकर हैंडिकैप परसेप्शन को हैंडिकैप्ड मनोभाव को आम दूर करवा। ठीक अच्छे जड़े हैंडिकैप केमी आईएएस होची हैंडिकैप जड़े एथलेटिक होची तार मध्य उदाहरण देकी तांकर हैंडिकैप्ड परसेप्शन को चेंज करवा। देन मेक प्रोविजन्स एंड नॉट रेस्ट्रिक्शन आर जस्ट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड कौन कहूँ मेक प्रोविजन तांको मानक पाई आमे प्रोविजन तैयारी करबा एंड नॉट रेस्ट्रिक्शन के रेस्ट्रिक्शन रखिबा ने आर जस्ट टू नीड ऑफ द चाइल्ड रो नीड अनुसार आमे कौन करबा ट्राई टू एडजस्ट दिस टाइप ऑफ सेटिंग ओके। देन रिमूव सोशल फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स आमे कौन करबा ना सेमानंक पाई सोशल बैरियर कौन सब अच्छी सोशल डगमा कौन अच्छी फिजिकल बैरियर कौन अच्छी आम कहीपर एटीट्यूडनल बैरियर कौन अच्छी टीचर मानकर हो पियर्स मानकर हो स्टेक होल्डर मानकर हो से सब आमके दूर करने को पड़ो। पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ सच एज सोशल कम्युनिटी सोशल टीचर चिल्ड्रेन टीचर्स पेरेंट्स स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड सिस्टम समस्त मध्य गोटे पार्टनरशिप को आम डेभलप करवा टू डेभलप सच टाइप ऑफ वेल पार्टनरशिप विथ स्टेक होल्डर कम्युनिटी टीचर पियर्स पेरेंट्स चिल्ड्रेन एटसेट्रा एंड फाइनली एनसीएफ लास्ट कौन कहूँ एनसीएफ लास्ट कहूँ जो आम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करवा तेज आसो दिस पॉइंट ऑल गुड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिस ऑफ इनक्लूजन सेटअप टीचिंग रो जो सब गुड प्रैक्टिस अच्छी आम कौन करवा ना इनक्लूसिव एजुकेशन आम प्रैक्टिस करवा इन द फील्ड ऑफ इनक्लूसिव एनवायरनमेंट लर्निंग टुगेदर इज बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड प्रतिटी छात्र पाई
कौन बेनिफिट हम ना गोटे टुगेदर लर्निंग हम समस्ते डाइवर्सिटी को जानवे चिन्हे सहित आडजस्ट करेंगे आज ए एक्सट्रा स्किल एक्सट्रा कैपेसिटी ऑफ एवरी चाइल्ड ये गोटे बढ़िया बेनिफिट हम समस्त किंतु प्रैक्टिस हवा दरकार केते दूर प्रैक्टिस होची इनक्लूसिव एजुकेशन ता गुरुत्वपूर्ण अटे नॉट कॉन्सेप्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट सर्विस आर एसेंशियल सर्विस सपोर्ट सर्विस बिकॉज ही और सी और दे नीड्स समटाइम्स स्पेशल केयर स्पेशल नीड्स सो सपोर्ट सर्विस फॉर एसेंशियल सर्विस फॉर all children as special children or all children if you what to teach learn from the child identify his strength and not to limitation ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କାପାସିଟି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଡ୍ରଇଂ ତାକୁ ଶିଖେଇବା क्राफ्ट बना तो क्राफ्ट शिखेबा रनिंग करे इच्छा अछि रनिंग करवा कि एक्स्ट्रा क्वालिटी सॉन्ग अच्छे सॉन्ग शिखेबा सच टाइप ऑफ क्वालिटी आम इग्नोर करवा नहीं लिमिटेशन दबा नहीं सेमानक मध्यरे इनकलकेट म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इंटर इंडिपेंडेंस इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज तांको मध्यरे सेही गुण को बाहर करवा म्यूचुअल रेस्पेक्ट अर्थात accepted of diversity and culture of every child to each other समस्त कल्चर को समस्त डाइवर्सिटी आम एक्सेप्टेड करवा एक्सेप्ट ग्रहण करवा रिसीव करवा और समस्त को म्यूचुअल रेस्पेक्ट दबा अर्थात म्यूचुअल रेस्पेक्ट मीन्स रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड इंटरडिपेंडेंस मीन्स स्पेशल चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड टीचर स्टेक होल्डर कम्युनिटी एमान मध्य कौन रहिबो कम्युनिटी नीड करियो स्पेशल चाइल्ड केयर को स्पेशल चाइल्ड करियो कौन टीचर को सपोर्ट टीचर सपोर्ट करेंगे स्पेशल चाइल्ड को कम्युनिटी को सर्विस दिज्व कम्युनिटी मध्य हेल्प करियो दिस इज इंटरचेंजिंग प्रोसेस बा इंटरडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ द इनक्लूसिव एनवायरनमेंट ओके एनसीएफ रो सब पॉइंट को टिके रिकॉल करदेबा जहाँफल आमर मन रही डिजेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किए कहता एनसीएफ 2005 हाँ failure of a child is an indication of the failure of school no selection procedure to be adopted for delaying admission to learner with disability accept different and elaborate diversity inclusive is not confined to the disabled is also means to existence learn human rights and conquer human wrong. Handicapped is a social construct. Deconstruct handicaps, make provision and not restriction, adjust to the needs of the child. Remove social, physical, and attitudinal barriers. Partnership is our strength, such as school community, school teacher, teacher children, children, teacher parents, school system, and outside system. All good practice of teaching are practice of inclusion. Learning together is beneficial for every child. Support service are essential service. If you want to teach, learn from the child, identify his strength and not limitation. Inculcate mutual respect and interdependence. Handicapped is social responsibility is most important. Now discuss aim and objectives of inclusive education. First of all, education for all, normal child or disabled child, education for girls, boys, special, normal, intellectual, education for all, protection of the constitutional right, education for all. Education is a fundamental right of all children. It is a protection of right.
Identification of a skill. First, teacher should identify the strength and special skill of a child, because identification of a skill, then know what is the strength of child, then train to this area to more better and development of his skill, attitude towards such type of particular area. Development of a social consciousness. Both community, teacher, educator, trainer should be provide a consciousness environment of a social boundary to develop such type of consciousness about constitutional right, social value, social participation, social challenges, etc. To prepare for new challenges. ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ how to face new challenges, because it is a 21st century, many challenges come his and her life. How to face this such type of challenges, computer challenges, IQ challenges, ICT challenges, etc. Development of a brotherhood, because brotherhood is it is a relationship of bonding, help to each other, share to each other, exchange of culture, etc. To improve quality of education. First of all, it is the most important because it is last point, but it is a very important, because such type of improvement is needed inclusive setup, because without quality education, without quality teacher, the inclusive is a concept, it is an idea but not practice. Quality education helps inclusive education rapidly remove such type of a prejudicial concept and such type of a dogma belief, such type of a wrong belief towards handicapped children or special children. Education is most important. Now discuss principle of inclusive education. What are the principle of inclusive education? First, no discrimination with student, because with discrimination inclusive education is valueless, because discrimination is a social but not କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେବେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ, ସୋସାଇଟି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିରେ ଜିଉଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନ ଆସୁ ସେ ପ୍ରତି ଏଜୁକେଟର, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଟିଚର ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଇକ୍ୱାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା। ଧାରା 21A ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଧରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସମାନ ଧରଣର ନଜର ରଖିବା। ସ୍କୁଲ ଆଡପ୍ଟ to the need of child, it is very important, because adopt means school should be changed according to need, capacity and interest of the students. Equal educational benefits for all childs, equal educational benefits for all child, ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ educational facility according to the student skill, according to student capacity, interest of the students such as drawing, swimming, dance, song, etc. It is education, it is a co-curricular education, co-curricular activities, not the outside boundary of education, it is a within boundary of education. The students views are listened to and taken seriously. ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଟିଚର ଶୁଣିବ ଏବଂ ତା କ୍ୱାରି ହେଉ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ତାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପୂରଣ କରିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ ଟୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କ୍ୱାରି and concept doubt of children, try to satisfaction in various point of view and with proof, and ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ବୁଝେଇବା।
and a suitable example. Okay, individual differences between students are a source of uh, richness and diversity and not a problem. ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ଆମେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଜାଁଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇଭରସିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଁଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଭରସିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଇନକ୍ଲୁଜିଭିଟି ଭରିଦେବା। କ'ଣ କରିବା, ଇନକ୍ଲୁଜିଭିଟି ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଚ୍ ଅଦର, ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର, ଟୁ ସେୟାର ଇଚ୍ ଅଦର। ଓକେ, individual difference between students are a source of richness। ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଡାଇଭରସିଟି ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ, आज थिला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। लास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्कूल अडॉप्ट to the need of students, equal educational benefits for all students, to students view are listened and to take seriously, individual differences between students are a source of richness and diversity and not a problem। এই कॉन्सेप्ट को ଆମେ ଆଖିରେ ରଖିବା। ଏମ୍ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପଢ଼ିଲେ education for all, protection of rights, identification of skill, development of social consciousness to prepare for new challenges, development of brotherhood to improve quality of education। तापर हम देखिले inclusive education as defined by NCF 2005 कौन कहला ना, disability is a social responsibility and आम कहीपर इनक्लूड कैन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इंटर इंडिपेंडेंस से कही 2005 2005। मीनिंग ऑफ इनक्लूजन, इनक्लूसिव एजुकेशन पढ़िले गोटे छात्र समस्त को जदि आम गोटे नॉर्मल सेटिंग रे पढ़ाई पारिबा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड इनक्लूसिव एजुकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग patiently in total class, and this class is continue in the next chapter, how inclusive education solve the students need capacity and how and why the inclusion is needed 21st century, and what are the skill of a teacher is most essential to cater to overcome such type of problem and create a better inclusive education। थैंक यू, समस्त को धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।